Hello everyone, welcome to another Math 1 session in which we are continuing with the chapter called Statistics. We have already seen a lot of things that we are covering in this chapter by recalling the mean, median, and mode for ungrouped data, doing the same for grouped data, and in the end we will understand the pictorial representation. Out of all these, we have already covered the mean, median, and mode for ungrouped data, which means the topic that we are covering today is Objective 6.1. We will be able to calculate the mean of grouped data. We have already understood the difference between the grouped data versus ungrouped data. Ungrouped data के लिए हमने mean calculate कर लिया, अब हम grouped data के लिए mean calculate करने वाले हैं. So let's quickly move ahead by recalling a few terms that we need to use in this video. The first is the class, second is class limit, and the last is class mark. Now if I say that the numbers from 11 to 15 is my class, आपको याद होगा क्लास तो ऐसा ही होता है, एक रेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल 0 to 10, 20 to 30. वैसे ही मैंने एक क्लास लिया 11 to 15. इसके क्लास लिमिट्स क्या होते हैं? There are two class limits if you remember, the lower limit and the upper limit. The lower limit is the lesser number, upper limit is the greater number. So इस क्लास के लिए the lower limit is 11 and the upper limit is 15. तो क्लास मार्क क्या होता है? इस क्लास में जो नंबर्स हैं इसके बीच का नंबर क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ 11 to 15 आर द नंबर्स, आई एक्सपैंड देम, बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? इट्स 13. सो द क्लास मार्क फॉर दिस क्लास इज 13. Another way of finding the class mark is adding the upper limit and the lower limit and then dividing it by 2. If you do the same way, again you will get 13 as the answer. 26 divided by 2 will give you 13 only. So in this way we can find the class mark. Now let's move ahead to calculate the mean of group data, and the method that we are using is called the direct method. You need to know the name of this method because it is sometimes written in the question paper this way. So let's do this by actually solving an example. So pause the video, draw this table, write down the question, make sure you are drawing it in a proper way and in the same way as it is given in the notebook. Okay, hoping that you have written the question, let's move ahead and see what do we do next. To calculate the mean of this data, ये group data है, right? It is in groups of 0 to 20, 20 to 40 and it is given that there are 3 students who have scored 0 to 20. There are 7 students who have scored 20 to 40 and so on. So इस केस में, इस टेबल में क्लास कौन सा है? All these numbers which are from 0 to 20, 20 to 40 and so on, this is the class. And what is this called? The number of students? This is called the frequency. So this is the class, this is the frequency. इसके बाद हमें खुद से एक टेबल बनाना है. वो टेबल कैसा दिखता है? This is how the table would look like. उस टेबल में 4 कॉलम्स होंगे. First is the class, which is the same as the percentage of marks given. Second आप बनाएंगे class mark and this will be called xi. Third column is frequency, which is the number of students and this is called fi. And the last column is the multiplication of xi and fi. अब इस 4 कॉलम में से 2 कॉलम्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. कौन से? पहला तो क्लास गिवन है. क्लासेस क्या है? यही सेम जो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 है, ये पूरा क्लास बन जाएगा आपका. और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये जो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये भी गिवन है करस्पॉन्डिंग, तो ये भी कॉलम आप भर सकते हैं. सो आउट ऑफ द 4 कॉलम्स 2 कॉलम्स यू हैव ऑलरेडी फिल्ड. नाउ यू हैव टू फिल द रिमेनिंग 2 कॉलम्स. कैसे भरेंगे? लेट्स सी. नाउ फॉर द फर्स्ट क्लास 0 to 20, इफ आई टेक, व्हाट इज द क्लास मार्क? क्लास मार्क मतलब बीच का नंबर. क्या होगा बीच का नंबर? अब 0 to 20 के बीच में जाएंगे तो द नंबर वुड बी 10. वेरी सिंपल. फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी गिवन है, इट इज 3. सो यू हैव फाउंड xi विच इज 10, यू हैव फाउंड fi विच इज 3 फॉर द फर्स्ट क्लास. ये जो लास्ट कॉलम है इसमें क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है. मतलब 10 into 3 आपने मल्टीप्लिकेशन किया, इट इज गिविंग यू 30. We are going to do the same thing for the remaining classes. So pause the video, try to complete this table on your own. Okay, once we have completed this table, let's see what is it that we are going to get.
This is the final table that we should get for all the classes that we have filled up. इसके बाद इसके नीचे आप एक और कॉलम ऐड करेंगे विच इज़ कॉल्ड द टोटल कॉलम. टोटल कॉलम में आप दो चीज़ फाइंड करेंगे. दिस सिंबल इफ़ यू कैन रिकॉल दिस इज कॉल्ड सिग्मा. ये जो ऐसा जिगजैग सा सिंबल दिख रहा है इसका नाम है सिग्मा. सो आई एम गोइंग टू फाइंड टू थिंग्स. सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई का मतलब होता है एफ आई में जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करिए. सो आई विल ऐड अप ऑल दीज नंबर्स एंड सिग्मा एफ आई इज 50 in this case. Next I have to find sigma xi-fi. sigma xi-fi का मतलब है यहाँ पे xi-fi में जितने भी नंबर्स हैं आप उन सबको ऐड करेंगे. When you add up all of them you get 2840 as the sigma xi. The formula to calculate the mean of grouped data is given by x bar. x bar का मतलब होता है mean. Mean is equal to sigma xi-fi divided by sigma fi. Now you have already calculated these values. आपको पता है sigma xi-fi का वैल्यू कितना है 2840. sigma fi का वैल्यू कितना है 50. So let's put down these values. When you put these values the number that comes is 56.8. This means that the mean percentage of the class मतलब क्लास का एवरेज परसेंटेज जो है वो 56.8 है. We have done the mean for the ungrouped data. This was the mean of grouped data by using xi-fi summation xi या sigma xi-fi का formula. Okay, let's do another question by our own. So this is the second question. Again pause the video, try to understand the question. The maximum temperature in degree Celsius of 30 towns in the last summer is shown. तो हमने क्या किया, एक सर्वे कंडक्ट किया 30 टाउन्स में और उनका मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब पूरे दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है वो हमने नोट डाउन किया और हमने एक टेबल बनाया. टेबल का मतलब क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर 24 to 28 कितने टाउन्स में था 4 टाउन्स में. मतलब देयर वर 4 टाउन्स जिनका मैक्सिमम टेम्परेचर 24 to 28 तक का था. देयर वर 5 टाउन्स जिनका मैक्सिमम टेम्परेचर 28 से 32 तक था एंड सो ऑन. Now to do this question I am telling you the steps that you need to follow. You can actually start doing it by yourself. You can also write down the steps. The first thing that you need to do is you need to draw this table. तो आपको ये टेबल यूज़ ना करके एक नया टेबल बनाना पड़ेगा which will have these 4 columns. Once you draw this table, you are going to add another row in it जिसमें आप sigma fi और sigma xi-fi find करेंगे. जब आपको ये values मिल जाएंगी तब you are going to use the formula that x bar which is mean is equal to sigma xi-fi by sigma fi. Let's use the 3 steps and see what have we got. You can actually pause the video, try to do the question yourself and then we'll see the solution. So when I make the first step of the column, this is the table that I am supposed to get. Please make sure you match all the values with whatever you have got. xi-fi कैसे, 24 to 28 के बीच का नंबर 26 है, उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, जो भी नंबर आया यहाँ पे लिख दिया. सिमिलरली 28 से 32 के बीच का नंबर 30 है, 5 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आया यहाँ लिख दिया. Then what do? We find the total. When I find the total, my sigma fi is 30, sigma xi-fi is 1048. The last step is put the values in the formula and when I do that, I get the final value as 34.9 degrees Celsius. My humble request to everyone is not to use the calculator because आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा. आप खुद से डिविजन करिए और प्लीज़ ट्राई टू सी इफ यू आर गेटिंग दिस आंसर और नॉट. ओके, so this is how we have calculated the mean degree Celsius of the 30 towns. मतलब on an average in 30 towns में maximum temperature 34.9 degree Celsius था. Now that we have understood the steps, let's try to do some questions on our own. This is the first question and try yourself. You will be doing it properly in your notebook. Please make sure these are textbook questions and you have to do them. Question कहता है the table shows the number of students and time utilized for daily studies. मतलब what we are calculating is number 1 time 0 to 2 hours. So in my survey there were 7 students who are daily studying 0 to 2 hours. There are 18 students who are daily studying 2 to 4 hours. There are 12 students who are daily studying 4 to 6 hours. I have to find the mean time spent by the students. मतलब on an average बच्चे कितना time spend कर रहे हैं.
Please use the following steps that have been given. The final answer that you should get is 4.36 hours. On an average, the students are spending 4.36 hours. If you're not getting the answer, please check your calculations, go back, and we can take up the questions when we meet in the online class. Another question that you can do yourself, it's an easy question again. A milk center sold milk to 50 customers. मतलब एक मिल्क सेंटर है जहाँ पे दूध बिक्री होती है, उसने 50 लोगों को मिल्क बेचा है. The table shows the given number of customers and the milk they purchased. मतलब कितने कस्टमर्स ने कितना मिल्क परचेज किया वो टेबल में शो है. आपको फाइंड करना है मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड. टेबल का मतलब क्या है? There are 17 कस्टमर्स जिन्होंने 1 से 2 लीटर मिल्क खरीदा. There are 13 कस्टमर्स जिन्होंने 2 से 3 लीटर मिल्क खरीदा एंड सो ऑन. आपको कैलकुलेट करना है ऑन एन एवरेज लोगों ने कितना मिल्क खरीदा. By solving by the same method the 3 steps that we have done, the final answer that you should get is 2.82 liters. Please make sure you are doing these questions all by yourself. We will be taking these up again in the online classes. Only if you have done this by yourself, you will be able to better utilize the time. With this, we come to the end of the session for today. Thank you so much everyone for engaging in this video. Have a nice day.